Hello everyone and welcome to today's video. So what we have brought for today's video is what are the benefits of filing an income tax return. So if I go and say someone to file his or her income tax return who is not used to file his or her income tax return, the main question will come, why should I file the income tax return? I don't want to show my income. I don't want to pay tax to the government. Why should I pay it? And it's just there is lot of corruption and what and all. People will have n number of reasons to not pay tax, to not file the returns, right? But with this video, we'll try to understand what are the major benefits that a taxpayer or an income tax filer will have in case he or she files his or her income tax return. Okay, so let's start this. The first and the very basic and important advantage that the income tax payer or income tax filer will have is he or she will have a easy loan approval. So in case if you wish to take some loan, maybe for your future house, maybe for your dream car, maybe for your two wheeler, or maybe for your children or family members education, okay, so you'll have to present to the bank or to the financial institution wherever you want to take loan from, that what is your income and whether that income is sufficient to pay that loan off. So let's understand this with the example. Okay. Suppose I go to a bank and I ask them to give me 20 crore rupees of loan. So will any bank give me 20 crore rupees of loan without any backings or without any supportings? No, right? They'll try to understand what is my income, whether my income is sufficient enough to pay that 20 crore loan off. Okay. So now the second thing will come. I can say to bank that my income is 50 crore rupees. I can pay that 20 crore loan easily. Do you think saying this will actually help bank convince itself? No, right? Why will the bank person believe me? He's not my relative, and even in case he is relative, he has to work under some principles or some guidelines, correct? So बैंक वालों को भी ये लोन प्रोसेस करने के लिए कुछ ना कुछ पेपर चाहिएगा, कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट चाहिएगा टू अंडरस्टैंड व्हाट इज योर इनकम। आपकी इनकम क्या है, आपकी आय क्या है, उसके हिसाब से वो आपको लोन देंगे, करेक्ट? अगर मेरी आय 1 करोड़ रुपए है तो मैं 20 करोड़ का लोन ले सकता हूँ, बट अगर मेरी आय ही कम है तो मैं 20 करोड़ का लोन नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि बैंक को भी वो समझ आएगा कि ये बंदा वो लोन चुका नहीं पाएगा और ये उनके लिए एक घाटे का सौदा है, करेक्ट? सो अगर मुझे कोई भी लोन अभी लेना है या फ्यूचर में लेना है तो मुझे उसके लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी एंड अकॉर्डिंगली इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग एंड टैक्स पेइंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। May it be for your dream house, may it be for your dream car, dream bike, sports bike, may it be for your any family member's education, may it be for children's marriage, children education, your brother sister's education, further studies, whatnot. The next advantage is quick visa application processing. Okay, so in case you apply for any country's visa, अगर आज मुझे विदेश जाना है, मुझे किसी और कंट्री में जाना है, तो मुझे वहाँ के वीज़ा के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। अब मुझे कोई और कंट्री अपने वहाँ क्यों आने देगी? दे विल चेक माय इनकम, राइट, कि ये बंदा कितना कमा लेता है उसकी खुद की कंट्री में। और वो कैसे पता चलेगा? जब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मुझे वो सर्टिफिकेट नहीं देगी कि हाँ इसका इतना इनकम है, इसने इस इनकम पे टैक्स भरा है। दूसरे कंट्री की, विदेश की सरकार हमारी सरकार का सर्टिफिकेट देखेगी कि हाँ इस बंदे की इतनी इनकम है, ही इज अर्निंग दिस मच ऑफ इनकम एंड दैट्स व्हाई ही इज एलिजिबल टू कम टू माय कंट्री। इफ आई एम नॉट अर्निंग दैट मच, अगर मेरी आय उतनी नहीं है तो मैं यूएस जाके क्या करूंगा? मेरी जितनी इनकम होगी मैं तो वहां उड़ाऊंगा ऐसे ही, करेक्ट? तो मेरी जितनी इनकम है उतनी इनकम क्या सफिशिएंट है वहां सरवाइव करने के लिए? ऐसा ना हो ना कि मैं यहाँ पे लोन, यहाँ पे कर्ज ले रखा है, मैंने यहाँ पे घोटाले कर रखे हैं, आई एम ट्रैवलिंग टू यूएस, राइट? तो वो लोग आपके इनकम टैक्स पर्सनल नेम के, या इफ यू आर गोइंग इन नेम ऑफ अ कंपनी, दे विल चेक ऑल ऑफ दिस, योर प्रीवियस 3 ईयर और 5 ईयर इनकम टैक्स फाइल रिटर्न्स। उसमें कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, कोई पेनल्टी नहीं होनी चाहिए, एंड ऑल ऑफ दैट क्लॉजेस दैट वेरी फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। सबके अपने अपने क्लॉजेस है, सबके अपने अपने कायदे हैं। तो अगर वीजा एप्लीकेशन क्विकली प्रोसेस करवाना है देन डेफिनेटली इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग इज मैंडेटरी। नेक्स्ट इज कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस टू रिड्यूस टैक्सेस। अब इसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं। ओके, तो सपोज आप कोई बिजनेस कर रहे हो, तो इनिशियल 1-2 साल आपका लॉस हुआ, तो आप सोच रहे हो लॉस है तो इनकम टैक्स रिटर्न में फाइल क्यों करूं? ऐसा नहीं है। अगर आपका लॉस भी है तब भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहिए।
क्यों? क्योंकि आज जो आपका लॉस हुआ है, वो आपके फ्यूचर के प्रॉफिट में से माइनस होने के बाद आपको बची हुई अमाउंट पे टैक्स भरना पड़ेगा। एक छोटे से एग्जाम्पल से, उदाहरण से समझते हैं। अगर सपोज आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया, उसका पहले 2 साल में लॉस हो रहा है 500 करोड़ रुपए। पहले साल और दूसरे साल दोनों का मिला के 500 करोड़ हो रहा है। तीसरे साल में आपने 1000 करोड़ का प्रॉफिट करा। तो अब तीसरे साल में आपको 1000 करोड़ पे टैक्स नहीं भरना होगा। अगर आपने पहले और दूसरे साल में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया है, तो आपको तीसरे साल में 1000 करोड़ माइनस 500 करोड़, दैट इज बचे हुए 500 करोड़ पे ही टैक्स भरना है, ना कि पूरे 1000 करोड़ पे। ठीक है। तो मेरे पुराने जो नुकसान है उन सबको मैं आगे ला सकता हूँ, और उनको मेरी आज की आय, आज की इनकम, आज के नफे में से निकाल के फिर बची हुई राशि पे मुझे टैक्स देना पड़ेगा। एक और क्रूशियल एडवांटेज है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का। बहुत बार क्या होता है, जैसे आई टॉक अबाउट सैलरीड पीपल, ठीक है, जिनके महीने की फिक्स आवक है, जो किसी कंपनी में काम करते हैं। तो वहां पे बड़ी बड़ी कंपनियों में टैक्स कट के सैलरी अकाउंट में आती है बंदे की। तो अब वो टैक्स कट जाती है। कभी कभार क्या होता है, उस बंदे की सैलरी टैक्सेबल है ही नहीं, बट क्योंकि कंपनी बड़े स्तर पे है, तो कंपनी के लिए वो मैंडेटरी है वो टैक्स काटना। तो उस व्यक्ति को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करके जितना उसके एम्प्लॉयर ने टीडीएस डिडक्ट किया है, वो उसे रिफंड लेना चाहिए। अगर पूरा का पूरा नहीं आ रहा है, तो जितना आ रहा है उतना। सो सपोज लेट्स टेक ए एग्जांपल, इफ माय इनकम इज 100 रुपीज, ओके, आउट ऑफ विच एम्प्लॉयर, जो कि जिसने मुझे सैलरी पे रखा है, जो मेरी कंपनी है, उसने 30 रुपए टीडीएस काटा, बच्चे कितने, 70। तो 70 मेरे अकाउंट में आ गए, 70 इज नाउ credited to my account. So out of this 70, ideal tax should have been 20 rupees. So 10 rupees has been additionally deducted as TDS. वो 10 रुपए मेरे एम्प्लॉयर ने ज्यादा काटे टीडीएस के फॉर्म में, तो वो अगर मैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करूंगा, तो मैं वो 10 रुपए रिफंड ले सकता हूँ सरकार से। उसके लिए भी ये इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी है। बिना रिटर्न फाइल करे उससे क्या पता कि आपको वापस लेने। Why will the government return you? They'll not return you unless until you pay the you file the income tax return and make the government aware that, see government, this is what I need back from you. Why? Because my income is taxable at this amount and this is the tax due. Whereas my employer has deducted this TDS and this is the balancing figure which I need to recover from you. तभी हम ये इस तरीके का नोटिस भेजेंगे सरकार को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करके। जब ऐसा हम रिटर्न फाइल करेंगे, दे विल गेट टू नो कि दे हैव टू रिफंड अस, एंड देन ओनली वी विल गेट द रिफंड। एक और बेनिफिट है टू फाइल द इनकम टैक्स रिटर्न, वी विल नॉट बी लेविड विद एनी पेनल्टी और पनिशमेंट। ठीक है। सो टू अवॉइड दिस पेनल्टी पनिशमेंट ऑफ वॉट एवर इट इज, 1000 5000, दैट डिपेंड्स व्हाट इज एप्लीकेबल टू यू। तो उससे बचने के लिए भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी है। बेकार में क्यों पेनल्टी देनी, बेकार में क्यों पनिशमेंट के लिए लेवी होना है, कोई मतलब नहीं है। इट्स बेटर यू फाइल द इनकम टैक्स रिटर्न, apply to all the rules and regulations, all the provisions that the government has applied under Income Tax Act or under any act. Next benefit would be to improve your credit worthiness for future loans. अब इसका क्या मतलब हुआ? So see, many of you will argue that you don't want a loan today, okay? But God knows what future is, correct? Maybe in future you require some loan, maybe for emergency purpose, maybe for any personal need, maybe for any unwanted or unplanned circumstances that had come up in front of you, right? So you might need loan to immediately fund that financial need, correct? तो अगर आपने पास्ट की पीरियड में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया होगा, तो दैट क्रेडिट वर्दिनेस विल नॉट बिल्ड अप, and the banks will see that this person is not filing income tax return. How can I give the loan to this person? We don't have any proof what is his income, what is he paying as tax to the government. When he's not paying tax to the government, how will he refund money to me, or why will he pay back the loan to me? When he's not loyal to the government, how he will be loyal to the bank? That is the basic idea of credit worthiness that the bank will get in case you don't file the income previous year's income tax return. That's why also previous year income tax return filing is very important. Don't prepare yourself for today, prepare yourself for future as well. In case you need the loan in future, you should be prepared from today. And the last but not the least, paying the income tax return, you will not get reminders. Filing the income tax return, you will not get reminders, you will not get
updates. You'll not get threatening messages from the government. You will be levied with penalty and punishment, whatnot. So get peace of mind for you and your family both. So in turn, we could understand that filing income tax return, paying whatever tax is applicable to you, is beneficial and has many positive factors that will in turn help you for your future plans, for your future executions. Okay, I will not say that pay whatever is coming. You can smartly manage your tax. Let me know in comment box if you actually want to understand what are the ways in which a person can save tax. Let me know if you want a quick video or a detailed video on that. I'll be more than happy to prepare that. But for now, hope you liked our video. We'll be out with a new video soon. Till then, stay healthy and stay safe. Thanks.